Okay. As usual, nobody is on the stream. The market is range bound. Okay. The screen not loading. Acha. Oh, okay. Screen is not loading, huh? अरे यार ये क्या हो रहा है अभी? स्क्रीन लोड क्यों नहीं हो रही? ओके, स्क्रीन का शायद सॉर्ट हुआ है और वेट कर रहा है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद लाइक सस्टेन हो रहे तो ग्रेट, नहीं ही तो लाइक विल प्लान, नो वरी। कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? वेट टिल द मार्केट मूव्स। There it is. कहाँ लगाने का है, क्या लगाने का है?
इधर एक कप एंड हैंडल दिए थे बट did not break out. So and also inverted head and shoulder. If you see, there's an inverted head and shoulder and also a cup and handle. But उसका breakout नहीं दिए थे. So that is still our line. Once that is broken, then we'll look for trades ऊपर की तरफ. First we'll see if it breaks this particular trend that it is following. नहीं तो उसका एक स्कैल्पिंग प्लान करते हैं. कोई होता था तो इट्स कुड हैव बीन फन भाई. कोई नहीं है. 0 people watching. The same situation. इथेरियम के लिए रेसिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करके रखते हैं. ये चैनल के बाहर ही, नहीं तो हम नॉट ट्रेडिंग. थोड़ा लाइक स्कैल्प वगैरह हम प्लान करेंगे पर नॉट अ पोजीशन टू होल्ड. देखते हैं. What do you feel? Okay, there's one viewer. Hi bro, welcome to the stream. So yes, this is a new venture. If you can comment down where you're from or what your name is, we'll be motivated. Or if there is any charts that you want us to analyze for you, you can even just type that in the chat. इसके ऊपर दैट इज़ व्हेन आई एम प्लानिंग एक फॉर अ पोजीशन दैट आई विल बी होल्डिंग. स्कैल्प वगैरह हम प्लान करेंगे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से. इफ इट डज नॉट गिव अ ब्रेकआउट हियर देन थोड़ा ऊपर कर देते हैं. यस, दैट इज़ द ट्रेंड लाइन, दिस इज़ द चैनल. सो इसके हिसाब से इफ़ यू वांट इधर से एक नीचे की तरफ एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं. Only if it does not break out. I am still looking for a bullish run. Let us know what like should we analyze Ethereum, BTC or gold, whatever we should be doing. Just let us know. We shall do that for you. $102 700 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो लेके चैनल का ब्रेक कंसिडर कर सकते हैं. फिर भी लाइक दिस इज़ अ ह्यूज रेजिस्टेंस, सो बेटर जस्ट डोंट रन इनटू अ ट्रेड नाउ.
retest देने दे. Don't jump. Let the levels be sustained. We'll see. कैंडल बना रहा है. ओके, इधर एक छोटा रिटेस्ट मिल रहा है तो लाइक ये ऊपर की तरफ दिस शुड बी योर टारगेट. ऐसे एक छोटा सा लाइक स्कैल्प, आई विल कॉल इट जस्ट स्कैल्प, बट स्कैल्प कर सकते हैं. इफ इट इज़ कंटिन्यूइंग एंड इफ यू हैड नॉट टेकन इट हियर, इधर कोई लाइक लिया था तो लाइक दे कुड हैव kept the Bollinger Band as their target, and like 50% could be booked right now, and like trail the stop losses, and like you could have just left. अभी इधर जो लोग नहीं लिया है, it would be better if you wait. इसको ब्रेकआउट दिया है, ट्रेंड लेके जो चैनल में जा रहे थे, ये डबल बॉटम के साथ W के साथ ब्रेकआउट दिया है. We'll see if this breaks out. If this breaks out, then we can expect a move, because इधर एक कप एंड हैंडल और हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिए थे. So we'll see if market is able to sustain those values. Running candle में मत घुसना, because Bollinger Band it's touching the Bollinger Band, so be careful. Running candle में मत घुसना. रिटेस्ट के साथ वापस जा रहा है तो then we'll plan a scalp, नहीं तो it will come back to this channel again. Said just how we expected. We'll see if it goes back to the channel or if this red candle ends like as a tiny red candle above 700, 102,700, then we can do a scalp ऊपर की तरफ. टाइम थोड़ा चेंज करना भूल गया, नहीं तो it's still in the channel, it's going back into the channel, then no entry. There is no entry if it is going back into the channel. We'll see if it breaks out. We'll see. We are not going anywhere. We are here. What about Ethereum? Yeah, Ethereum also has almost like almost here. It should break 2284. Then we'll look for it like ऊपर की तरफ. 2 views, just 2 views, and no one is texting. Bad, bro. We feel bad, man. We need your support to grow. If you're not giving it support, we'll feel bad, right? Definitely. It's
it's back into the channel. If this candle closes here, if this 5-minute candle closes here, then no entry, at least for now. $614. Ooh. Just like how I said, if you want to scalp नीचे के तरफ किसी को scalp करना है तो it's still in the channel. इस trend line के ऊपर somewhere like this can be your, you are entering here. This should be your stop. This should be your stop loss. And targets is 3 candles somewhere here. Yeah. Don't take that kind of risk is what I would say. 140 250 हाँ 1:8 1:2 रेशियो में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें. The entry was here, right? Yes. इधर कोई एंट्री कर रहा है तो I personally have not made any entry in that. I told you it's just a scalp for you guys. If you want, you can enter. If this candle is also red, then we'll take down the stop loss from here to here. We'll wait for the moment. Would have been fun if people who join the stream could just comment down what they think, how we can improve and things like that. Quick movement of price.
कुछ बाइंग प्रेशर था क्या पहले? नहीं ना। रेसिस्टेंस 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 जो जो लोग स्कैल्प करना चाहते थे, देखते to be near their stop loss already. I had already said only for people who want to take that risk. High risk था, मैंने बताया I am already looking for a bullish move. But जिन लोगों को एक ट्रेड लेने का या ऐसे फील कर रहे थे कि yeah this would remain in this channel, only for those people. But don't see this candle as a correction. This is not a correction. ऊपर के तरफ just retest वगैरह मत लेना ये इसको. It's a huge candle. It's literally a huge candle. क्या हो रहा है? 5 o'clock. Anything on the live chat? No live chats, nothing. Okay, there's another viewer. Any doubts? If the viewer just joined, then this is not a position. It was just for people if they wanted to take a scalp नीचे के तरफ if it comes back to this channel. It is not a trade that we have taken. I am not in that position. I am waiting for market to break this and then move up. ये चैनल को ब्रेक दिया है, बट द मार्केट शुड सस्टेन. ये कैंडल इसको सस्टेन करना चाहिए. ओनली देन वील लुक फॉर द ट्रेंड दैट वी वर लुकिंग फॉर और वेटिंग फॉर.
रेट को कम करने के लिए बोल रहा हूँ। अगेन इफ़ देयर आर पीपल हु फील लाइक ये वापस चैनल के अंदर जा सकते हैं, जस्ट आई वुड से वेट फॉर दिस वैल्यू टू बी क्रॉस्ड 102571. Don't jump and say don't take your position from here. And for any scalping on such, inside when the market is inside a particular channel, never use more than like maybe 10% of your capital, because it's not a clear breakout or it's nothing. It's just we are seeing that we are just hoping that it will come back to the channel and then follow the trend that was happening. So in such cases, use very less portion or little portion of your capital in those kind of trades. एड़ा ऑडियो इनपुट हो रहा है वो सॉन्ग का कॉपीराइट. Mac. The mic is so good, bro. I would say even if you want to take that नीचे के तरफ एक शॉर्ट करना चाहते हैं तो wait for the market to at least break this trend line and then go back into this channel. Then you might see a fall. Till then it's better to just stick on to a study, waiting for the market to give a move upward and then enter a long position. Just keeping all this here so that even if someone is referring to it in future, it will be of use. I think I started streaming at around 4:30, right? When did I start streaming? स्टार्ट कब किए थे? हाँ, इसमें से भी पता चलेगा. Around 4:30 we started the stream, so we'll see if someone joins like till 6. If no one joins, then we'll end the stream at 6 and restart at 7. If there are viewers, then we'll just continue the stream. इसी stream को continue करेंगे. Even if I stop the stream, even if I go, if you're watching this video before this breakout happens, just wait, like maybe by around 7:30 this breakout might happen. When there is a volume spike, this breakout might happen. In that case, if it sustains that value, you will be able to almost kind of like 103,831 tak. I'm just saying it roughly. We'll see what kind of momentum happens, but yeah, till that level you will be easily able to book your profits. I'm just saying, if that breakout does not happen before 7 o'clock, उसका बात बता रहा हूँ अभी. Like if it happens before 6, great. If there are viewers coming into the stream before that, then I'll wait. If not, I'll end the stream at 6 or maybe even before, and then restart the stream by around 7. And yeah, I'll leave a alert on the screen, so if it happens, then I'll rejoin the same stream, maybe even before 7. बट या नीचे की तरफ कोई स्कैल्प कर रहे हैं तो वेट, एटलीस्ट ये छोटा सा जो ट्रेंड लाइन बनाया है
उसको ब्रेक डाउन करने दे, ये चैनल के अंदर आने दे, देन चैनल के बाहर का इज लाइक जस्ट आफ्टर द like I mean above the channel would be your stop loss, or somewhere here would be your stop loss. The entry would be below this trend line and inside the channel, and your target, if there is a quick momentum, then you can keep 102.254 as your first target. If there is no big momentum happening, it would be better to keep your targets at the support of the Bollinger Band. But remember, this should be broken. For me, I am waiting for the markets to break this, or maybe like a proper ये flag and pole बना के like ऊपर जा रहा है तो then I'll see if there is a momentum happening even here. If it's a proper formation that's happening, then I'll enter a long trade here also. Till then, no. Nahi. Till then, no. I'm not taking the trade. I'm using simple rules of price action for my trades. I'm not using any complicated stuff. Nothing. Just simple price action. That's it. Look at this. There's 3 viewers with an average view time of 32 seconds. That's all we have got. No, I'll be there in the stream like till around 5:45, 6. If the movement does not happen, if it does not break out, if it is breaking out, then I'll still continue like continuously. यार हमको remember, any trades नीचे की तरफ below this trend line. If the candle closes, retracement वगैरह is up to you, because it's a scalp. It is risky because the overall trend is bullish. Should we give a zero hero call? If there was people like for the expiry at 5 o'clock, like अभी 5:30 का एक्सपायरी के लिए कुछ तो दे सकते थे, 5 मिनट का कुछ ट्रेड, बट कोई नहीं है. आई थिंक लाइक आई एंडेड बाई 5:30 ब्रो. कोई ज्वाइन नहीं कर रहे, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो भी लाइक ऐसे ही जा रहे हैं. विल स्टार्ट एट 7:30 व्हेन द वॉल्यूम कम्स इन. I don't know, I feel like watching 3 Idiots. I might end this stream and just go watch 3 Idiots till the market makes a proper move. अभी भी मूवमेंट है. जिन लोग लाइक इधर से लाइक who were in the market like till when market was here, since when market was here, then they could have taken a trade clearly, but like we joined, like we started checking like somewhere around here at around 4:30. उसके बाद अभी तक लाइक प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं मिला है. विल स्टिल वेट कि इसको रेटस मत समझना till this green candle is a big one. Okay, if it is maybe like a $50 or $70 candle, till then I don't think don't take this. I would suggest don't take this as a retest, because उसके बाद भी वो नीचे आ सकते हैं. That is a different thing.
because Bollinger Band में gap नहीं है, there's very less gap. The Bollinger Band has very less gap, and ये हमारा एक मेजर रेसिस्टेंस हो रहा है 102,984. हाँ 102,980 something. Take take it around somewhere there. And already 30 minutes में 2 फेक हुआ है. अभी एक this has found an inverted head and shoulder and also a cup and handle which did not break out. देखते हैं क्या होता है. अभी ये W pattern, the double bottom that is forming here, if this gives a breakout then takes a retest here, and if it moves up from there something like this, like इधर से ऐसे इधर जाके वापस इधर रिटेस्ट मार के इधर से ऊपर. सो फॉर दिस फ्रॉम हियर विल टेक अ ट्रेड ऊपर की तरफ. आई वुड एक्चुअली सजेस्ट वेट टिल दैट. चार्ट को लाइक गिव सम टाइम फॉर द चार्ट्स टू मूव. इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. वापस ब्रेक डाउन. What are we seeing? See, now it is already a little above the channel, so even if it breaks this, it broke the trend line. Even if it breaks the trend line, be careful. ये channel का shell है ना, इसको support लेके this the band of the channel, और ये ऊपर का हिस्सा है ना चैनल का, उसको सपोर्ट लेके इधर से बाउंस बैक कर सकते हैं. शुड ब्रेक बोथ दिस. इट शुड कम अंडर दिस, इनसाइड ऑफ दिस, एंड ऑल्सो ये ट्रेंड लाइन को. देन लुक फॉर समथिंग इन द शॉर्टिंग. आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग टिल देन. अभी थोड़ा ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा लाइक अपडेट किया है बिकॉज दिस इज गिवन अ न्यू ट्रेंड लाइन लाइक 1, 2, 3 and 4. इसको ब्रेक डाउन करने के बाद चैनल के अंदर आ रहे तो प्लान योर स्कैल्पिंग. बट आई स्टिल फील द मार्केट इज गोना गो अप. सो नीचे की तरफ में तब देखेंगे व्हेन इट ब्रेक्स डाउन मे बी अनदर $1,000 डाउन, लाइक मे बी समवेयर अराउंड 102,000. उसके नीचे ही मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ फॉर शॉर्टिंग इट. I might take a scalp in between, but will not hold on to any trades till there is a proper momentum in the market. देखते हैं ब्रेक डाउन करके चैनल के अंदर आ रहे हैं तो लाइक पीपल कैन मेक अ शॉर्ट पोजीशन हियर, अ स्मॉल शॉर्ट स्कैल्प. बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द अप मूव. आई एम नॉट टेकिंग इट. I am not taking it. I am still waiting for the up move. Market is in confusion, indecision in the market. हैमर डॉजी सब कुछ बना रहा है मार्केट आज अभी पिछले 15-20 मिनट में. सो विल वेट. डोंट एंटर एनी ट्रेड्स नाउ, एटलीस्ट फॉर नाउ. विल सी. मार्केट लाइक जस्ट वेट, लेट इट मेक सम गैप फॉर द Bollinger Band, देन गिव अ प्राइस एक्शन, रीटेस्ट वगैरह देख के व्हेन इट मूव्स विल कैच दैट बिग मूव. व्हाई शुड वी वेट? Like why should we waste our money in small moves? Either be like we saw even here there was a huge buying pressure when this came down like this very quickly. Still, and it came down into the pattern also, the channel also, but still did not make it. The very next candle made a up move. So this can also be considered to be a support.
एक छोटा सा सपोर्ट है, नहीं तो इफ दिस यू सी दिस, ये वॉल्यूम, देयर वाज दिस वॉल्यूम गिरते गिरते वापस इधर आ गया, इधर एक छोटा सा वॉल्यूम आया, एंड इफ इट कम्स बैक हियर there can be this same liquidity sweep that is happening and it can move up. I don't know who I am taking this class for, there's literally nobody watching, but yeah, so that can also happen. So it is, the market looks bullish, at least for me according to my studies. I'm not jumping into any trades, I'll just wait till like market breaks this value, gives a retest, and for the bounce I'll enter. 102738. Okay. Ooh, 752. जो इधर शॉर्ट किए होंगे लाइक वो ट्रेंड लाइन का ब्रेक के साथ, विदाउट सीइंग इफ द मार्केट इज रिटेनिंग दैट वैल्यू, लाइक मूविंग एट दैट वैल्यू, लाइक होल्ड्स दैट वैल्यू, अभी तक उनका स्टॉप लॉस हिट किए होंगे. सो दैट इज़ वाई वेट. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर if you're looking to short, let it break down this trend, then let it come back into this channel, then make an entry. At least like if it breaks down this trend line, and even before entering the channel, if it gives a retest and then bounces back down, then too you can plan one. Till then, no, not at least till then. What about Ethereum? Same, kind of the same, somewhere around here like this. It goes, but it's more like forming a parallel. Yes. Why did I connect this here? Because once this was broken, this has become a support now. As this value was broken by this candle, now ये एक support बनाया है. That is why I did not connect the highs of the candles, but I made the low of this candle and the high of this candle. So I say ये channel में move हो सकता है. If it is near the resistance of this channel, then you can scalp, maybe plan a scalp. If you really want to short the market, then like you can just do it from here. नीचे touch करते ही like you can plan a long scalping. I'm talking about scalping, not holding anything for long, but like a long when it reaches the support, a short when it reaches the resistance. But till either of these are broken, I'm not looking into Ethereum. Gold is also consolidating. Oh, gold consolidation is actually good. 1, 2, 3, good. Wow, nice. Gold ka movement is actually good. I think gold will have a faster breakout than Bitcoin or Ethereum. I think gold will have a faster breakout. We will see. Gold might have big moves. Oh, another viewer. Hi, so if at least you wish to put something on the chat, let us know something, and great. If you have missed out like the part when I was doing the analysis of BTC, Ethereum or gold, just let me know. I shall explain what my plans are, like how I am seeing the market and things like that. Be great if you can put some chat so that we also know that hey, you're watching it live. He left. वो बंदा भी गया.
यार ये तो बोरिंग हो रहे हैं यार, एक भी बंदा लाइक कुछ नहीं बोल रहा है. लाइक आई एम जस्ट बीइंग फ्रैंक ऑन द मार्केट. मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो वेट करना पड़ेगा यार. लाइक most of these people who just come join the join the stream, maybe not seeing a position that is taken, or maybe like if you are not in a position, or if I'm not giving a trading tip, they will just leave this stream, might join someone else's stream, might end up losing the money. That is what I'm scared about. When the market is not giving big momentum, then that means market is not giving big momentum, bro. So you have to wait till it gives a breakout. Scalping का already मैं plan दिए थे. Okay. Is Ethereum gonna break down? Is Ethereum going to break down? That is the question. Ethereum अभी break down हो रहा है तो this can be the stop loss. एंट्री नहीं हुआ है. ओके, एंट्री नहीं हुआ है. आई एम जस्ट सेइंग इट्स जस्ट लाइक हाउ आई प्लॉटेड इट लास्ट टाइम ऑल्सो. एंट्री नहीं हुआ है. इफ इट कम, ओके, आई विल पुट इट समवेयर हियर सो दैट पीपल विल लेटर जॉइन द स्ट्रीम ऑल्सो अंडरस्टैंड्स. दिस विल बी द स्टॉप लॉस एंड somewhere here will be the first target. First target पहुँचते ही like just square of 50%. If it breaks down, I'm saying if it breaks down, then ये फर्स्ट टारगेट पहुँचते ही 50% स्क्वायर ऑफ कर देना. स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग में रखना. ओके, बिकॉज अभी भी लाइक even if this is broken down right now by Ethereum, the market is still range bound. Okay, so only if it breaks down. नहीं तो ये चैनल ये कंटिन्यू करेगा, इस चैनल में ही कंटिन्यू करेगा. द मार्केट विल कीप मूविंग लाइक अप डाउन. इसको ब्रेक करने के बाद ही we'll be able to see a proper up move. तब तक the movement is gonna be with very low momentum. It will be moving like up down inside this channel. Please have that in mind. Okay, Bitcoin नहीं, like 700. So till there we'll know. उधर तक उतना मोमेंटम नहीं होने वाला है. Just anyway, and before that might even show a fall from here and then go back up. अभी इस मार्केट को ना लाइक प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर ही जाना है, पर लाइक मोमेंटम कब आएगा, that we'll have to wait and watch. Don't jump into trades now. I'm just stating raw facts, okay? I don't want anyone to lose money. That is why I'm saying this. Like, but if you are adamant enough to, too adamant that you want to lose money, yeah, just go with small trades. Like small profits book कर सकते हैं, but for how long would you be able to sustain those profits? That's a big question. इसका ब्रेकआउट देने के बाद then we'll see. This is not a breakout like this. Breakout and it should sustain. Then we'll see a movement. तब तक नहीं. No. मैं बिटकॉइन में नीचे की तरफ देखेंगे only if it crosses here and like SMC like maybe a liquidity sweep happens, and if it falls down then I will see. नहीं तो नीचे के तरफ नहीं. Not for the downside. No. There's another viewer. I'm done asking these viewers to comment down something. So this is my first day of streaming like on this channel, so it'll be great if you can put on something in the chat. It'll be great if you want to know anything, like maybe other than these three, like BTC, Ethereum and gold. If you want to look for something else, just let me know. I shall tell you how the market or how that particular script or asset looks like. नीचे की तरफ मेरे लिए अभी के लिए कुछ नहीं है. ऊपर इसको ब्रेक कर रहे तो 103 को ब्रेक कर रहे तो देन वी विल सी. नीचे की तरफ as I said
it should break this trend line first, and first like if you want to just scalp a little bit, then after this trend line is broken till this, till the channel, the border of this channel, usko target rakhe, like keeping that as a target, you can short for a little bit, but that is not sustaining for me. It is not going to work out for me. That is not a sustainable profit for me, so I won't be doing it. नीचे की तरफ only when I feel like the whole market is reversing, maybe after giving a breakout here, and if the market is not able to sustain that value and if it's breaking down, then I will look for something to short. Either say like if it is going down, then not for this trend line anyway. इथेरियम ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. ओके, देखते हैं ब्रेक डाउन दे रहा है तो लाइक देखते हैं. इथेरियम में हम ऑलरेडी लाइक इधर पोजीशन बना के रखा है. आई एम नॉट एंटरिंग, आई एम नॉट टेकिंग दैट पोजीशन, आई एम जस्ट टेलिंग. किसी को पोजीशन लेना है तो लाइक अराउंड दिस वैल्यू, इसका नीचे जब आता है इस कैंडल के ऊपर के लेकिन विक को स्टॉप लॉस बना के एंट्री ले सकते हैं, बट ओनली इफ़ इट सस्टेन्स. ये 2 मिनट के बाद देखना. 2 मिनट के बाद अभी ये कैंडल इसके ट्रेंड लाइन के ये ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो रहे हैं, तो नीचे की तरफ एक स्कैल्प विथ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड उसको स्टेडली एंड फास्टली ट्रेल करके जाना. देन यू विल बी एबल टू टेक अ ट्रेड हियर. नहीं तो नहीं. Gold is also beautifully following the trend line. Beautifully following the trend line. अभी भी नहीं, just let this candle end. Let this candle end and let it still be out of this trend line. Then we'll see. अभी ये मैंने लिया नहीं है, जस्ट फॉर पीपल टू, फॉर अ रेफरेंस पर्पस आई हैव पुट इट हियर. इफ इट ब्रेक्स दिस डाउन, ब्रेक्स इसका लो, ये बिग कैंडल का ये लो, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो नीचे के तरफ वी विल सी विथ दिस एज द स्टॉप लॉस विच शुड बी ट्रेल्ड वेरी फास्ट. इट शुड बी ट्रेल्ड वेरी फास्ट. छोटा प्रॉफिट, छोटा लॉस. इट्स अ स्कैल्प ट्रेड एंड नथिंग एल्स. एंड दिस वैल्यू, दिस आई हैव पुट इट हियर just for a reference purpose. I have not taken a trade here. गोल्ड का तो जस्ट इसके ऊपर, गोल्ड का ओनली अबव द ट्रेंड लाइन. हम इथेरियम को ही देखते हैं. अभी वो कैंडल का भी क्लोजिंग आ रहा है. कैंडल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. आई टोल्ड यू गाइस, डोंट एंटर. कैंडल इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग. देखते हैं क्लोजिंग होने दे. नया कैंडल हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली अभी वापस ये चैनल में जाएगा. नहीं तो इफ़ इट कम्स डाउन देन इसको ब्रेक करने दे. हमारा स्टॉप लॉस, इट्स एक्चुअली गुड बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस भी इतना नीचे आएंगे. इफ़ इट इज़ गोना कंटिन्यू द फॉल फ्रॉम हियर देन हमारा स्टॉप लॉस भी इतना नीचे आएंगे. बट इसको ब्रेक करना है पहले. ये लो को, इस कैंडल का लो को ब्रेक करना है, उसके बाद ही नीचे की तरफ. ये तो नहीं. दिस विल बी द स्टॉप लॉस. ओनली इफ इट सस्टेन्स बिलो दिस. क्या मैं यह ट्रेड नहीं लिया हूँ. आई एम सेइंग अगेन, इसमें मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ. इसके नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो देन इधर तक होल्ड कर सकते हैं. छोटा सा ट्रेड है, वेरी स्मॉल ट्रेड, एंड ओनली इफ इट ब्रेक्स डाउन एंड सस्टेन्स. नहीं तो नहीं.
इधर भी आके लाइक जो लोग इधर वो एंट्री लिए थे ना, उनका स्टॉप लॉस अभी मार्केट ने लिया मार्केट ने. ऑल दिस इज प्रूविंग दैट आवर स्टडीज ऑन दिस फॉर ऊपर के तरफ इज very much possible that move might happen with a good momentum is what all those things are showing us. ये false breakdown वगैरह है ना, like eating up people's stop losses, all that proves just that. So wait for the market to break this, please. I might not be a familiar face for a lot of you, but yes, people who joins the last stream is also leaving very quick, maybe because I'm not a familiar face. But yes, please, validate, check what I'm saying, if the market is going according to that. If you feel that okay, ये बंदा genuine है, then watch the stream completely. Like, it would be great if I can see a lot of, maybe not even a lot, even if one person comes in the chat and be like hi, or like what do you think about this particular crypto. मैं सिर्फ टेक्निकल्स बता सकता हूँ क्रिप्टो. लाइक आई डोंट डू अ लॉट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑन क्रिप्टो करेंसी. सो टेक्निकल्स कुछ करना है तो मैं करके बता सकता हूँ तुम लोग को. और फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे दैट इज़ डे आफ्टर टुमारो से एवरी मंडे टू फ्राइडे आई विल बी स्ट्रीमिंग लाइव ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 2. निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी करना शुरू करेंगे मैंने. सो फॉर इफ़ यू आर इनटू द इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं तो लाइक मेरा उस स्ट्रीम भी लाइक ज्वाइन कर सकते हैं. इसी चैनल पे होगा लाइव ट्रेड विद सेड. मैं ना थोड़ा ब्रेक लेके आएंगे यार. ये अभी I'm still waiting for this level to be broken. I know you guys might say that's a big level to be broken. It's almost इधर से 200 points ऊपर जाना पड़ेगा इस लेवल पहुंचने में. But just understand that wait would be worthy, because if you try to long the position from here, you can see how the candles are forming. So because of that, it's easier for your stop loss to be 100. It's just matter of waiting. Don't finish your capital off even before the market reaches the breakout. We'll wait till the market is reaching the breakout. Once it gives the breakout, उसका retest के बाद हम आराम से ले लेंगे trade and we can book good profits. So wait. I know you might be saying like अभी तो it's just trading at almost 102,782 and I am expecting the market to go up above like almost 200 points up. उसके बाद ही मैं ट्रेड लेंगे. हाँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेंगे क्योंकि आई डोंट वांट टू फिनिश माय कैपिटल. एंड आई जस्ट वांट सच व्यूअर्स आल्सो हु डज नॉट वांट टू वॉश देयर कैपिटल ऑफ. दे आर रेडी टू वेट, दे आर पेशेंट इनफ टू वेट फॉर द मार्केट टू गिव बिग मूव्स एंड देन टेक ट्रेड्स. अभी इथेरियम का भी वही सीन हो गया होंगे लाइक एज आई सेड. हाँ, ये वापस इसमें ही आ गया. मैं बताया ना लाइक इधर ट्रेड मत लेना. I told you, this is why I kept it here. ये कैंडल के नीचे आ रहा है तो देन यू लुक फॉर अ स्कैल्प, नहीं तो नहीं. बिकॉज इधर जो लोग अभी एंटर किए होंगे जस्ट थिंकिंग दैट अभी इस ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है, उसका अभी स्टॉप लॉस क्या है यार. स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो लाइक ये लिक्विडेट हो जाते हैं अकाउंट. अभी तक इट वुड हैव बीन लिक्विडेटेड. नहीं तो इधर का ही स्टॉप लॉस था तो इट्स टेकन. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग जस्ट वेट फॉर द राइट मोमेंट. डोंट जंप इनटू टेकिंग ट्रेड्स. I know for sure, definitely, like 100%, there would have been some, at least like a couple of people who would have made a short entry here, and उसका अभी next candle like पूरा stop loss खा के like they would be sitting and crying right now.
That is why I say just wait for big moves to happen. Scalp is fine, it's cool, you can make some money out of it, but it's like, can you sustain that kind of profits or the kind of profits that you're making? Abhi ye another candle, I would say wait. We'll at least let this 5 minute like this candle को खत्म होने दे. Like we'll wait till the candle closes. At least till that wait. FOMO में इधर कोई एंट्री ले रहे तो लाइक ऐसे होते हैं. Like the next green candle will take your stop loss and just go ऊपर की तरफ. So wait. अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, इसको ये वैल्यू को सस्टेन कर रहा है, ये अभी इधर से ऊपर नहीं जा रहा है. इधर छोटा सा रीटेस्ट मिल रहा है तो ग्रेट, नहीं रीटेस्ट नहीं मिल रहा है तो भी लाइक इफ़ इट्स फॉलिंग समवेयर, इफ़ इट कम्स अंडर लाइक इनसाइड ऑफ आवर चैनल, देन लुक फॉर द ट्रेड. डोंट जंप इनटू टेकिंग ट्रेड्स राइट नाउ, बिकॉज अभी जो ये चैनल है ना, ये चैनल का ऊपर का बॉर्डर दैट वुड हैव बीन अ सपोर्ट नाउ. तो ये पहुँचते ही इधर से रिवर्स हो सकते हैं ऊपर की तरफ. So wait, let it come inside the channel, then plan, then do. The plan should be small. The plan should be small. It should be a scalp. Even if you are planning for something, because the Bollinger Band support has come to almost this level. So it's just a very small trade, even if it comes inside this. Nahi to nahi. If you don't want to scalp, if you are gonna wait for the big moves to happen, then wait. Then I would clearly say wait. Don't jump into such things. ये स्पाइक्स वगैरह इट्स मोस्टली इट हैपन्स इन द मार्केट जस्ट टू ट्रैप द ट्रेडर्स एंड द इन्वेस्टर्स. सो डोंट फॉल फॉर ऑल दिस. वेट करना, प्लीज़ वेट करना. आई डोंट नो इफ एनीबडी इज इवन सीइंग वाचिंग दिस लाइव. आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग अ लॉट, बट इफ एनीबडी इज वाचिंग दिस, आई डोंट वांट देम टू गेट ट्रैप्ड. दैट्स इट. माई लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. कोई ये स्ट्रीम देख रहा है नहीं देख रहा है मेरे को पता नहीं, पर कोई देख रहा है तो they should not be trapped. That's what I'm saying. And अभी इधर से नीचे की तरफ जा रहा है तो लाइक as I told 6 o'clock I'll end because my studies ये ऊपर की तरफ जाना है. So ये जब मार्केट इसके ऊपर आता है then only I'll restart the stream maybe at around 7:30. If it is going नीचे की तरफ then it's most likely to consolidate in this value, this range, which I'm not interested in. Which I am actually not interested in. So wait, let the market give you good moves. वो पकड़ना. अभी like if somebody in the fear of missing out of this this trade, if they had taken a trade from here, अभी तक they would have also come to their stop loss. So please wait. If anybody is watching, I don't want them to get stuck. That is why I'm saying. I know my stream is not having like thousands or 10,000s of viewers, but 1-2 people, whoever is watching, I don't want them to be stuck. And that is why I'm saying all this. Those people joined, like whoever is there on the stream, they joined the stream because they would have felt it is genuine. So at that point there is nothing like I don't have to man like मैं इधर से एक पोजीशन लेके, इवन इफ इट्स ऑन ऑप्शंस, इधर एक पोजीशन लेके देन लाइक इधर आते ही लाइक ऐसे हाँ एंटर करो एंड देन लाइक वो ये थोड़ा मूवमेंट में जो मैनिपुलेटेड प्राइस आया है उसको स्कैल्प करके एक्सिट करना. दैट्स नॉट माई वे. आई एम जस्ट गोना से हाउ आई एम ट्रेडिंग. आई एम जस्ट गोना पुट अप माई नॉलेज इन द मार्केट दैट इज़ देयर अप इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू. दैट्स इट. दैट्स ऑल आई एम डूइंग हियर. सो प्लीज़ नीचे की तरफ जाने दे, कोई नहीं जाने दे. Either don't feel the FOMO, don't get in the FOMO and take stupid trades here. If it's going down, then that means it is just a false movement that it is giving. Already इधर एक breakdown दिया है, that is true. हम 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो लाइक इधर से ऑलमोस्ट ये inverted head and shoulder प्रॉपरली देखते हैं. inverted head and shoulder ऊपर की तरफ जाना था, ब्रेकआउट लाइक फॉल्स ब्रेकआउट ही नहीं दिया, इधर से वापस फॉल किया. एंड कप एंड हैंडल सेम थिंग. अभी ये डब्ल्यू फॉर्म कर रहा है, डबल बॉटम फॉर्म कर रहा है, विल सी. एंड वो भी नहीं दिया. इफ इट इज़ फॉलिंग डाउन एंड वील वेट, देन वील वेट. नीचे के तरफ कब ट्रेड करेंगे? ओनली इफ देयर इज अ
प्योर मूवमेंट दैट इज हैपनिंग। ये चैनल के अंदर इफ you want you can take small scalps, but I am not interested in that. ये ये भी डबल बॉटम फॉर्म किया है, इसका रिटेस्ट भी हो सकता है, इधर से ऊपर जा सकता है। सो वेट if it is falling from here, if it is falling sharp from here, then we'll see, then we'll plan the trade then accordingly, like see what kind of volume is there, what is there's a fun phenomena that would be happening now actually. There's a fun, I know the webcam is here and my system where I see all the chats and everything is here, that's why I might be looking there a lot rather than here. So like those people now who enter the trade here, okay, just imagine if I'm not seeing this candle, the last candle abhi jo ho raha hai, no, oh shit, okay, usko just delete that from the screen, okay. And people who entered here, upar gaya, would have hit their stop loss, they would have exited. You know what happens to the psychology when this candle, the abhi jo candle ho raha hai, which is which is moving right now, ये candle वापस इधर पहुँचते, they would have entered the same like a shorting call, the put option if they're on options, ये इधर से put option वापस लिए होंगे with already a loss that is there. उसको क्या होगा, इसको क्या होगा, even before reaching the CTC of the actual two trades, the average of two trades, it will go back up. So, and that is because of psychology, and only like once in 10 times, okay, once while you take 10 trades, it will actually move down. Baki 9 times, that will also hit the stop loss, and you will end up losing more than what is your daily loss capacity or risk appetite. सो अभी ये नीचे के तरफ स्ट्रांगली आ रहा है, तो एंड विल सी, अभी देखते हैं, इसका ये चैनल के अंदर नहीं आया है, ये चैनल का ये बॉर्डर को सपोर्ट के तरह ले सकते हैं। सो इधर आके वापस ऊपर जा रहे हैं तो देखते हैं, नहीं तो ये रेड कैंडल इधर तक आके नेक्स्ट एक छोटा सा ग्रीन कैंडल रीटेस्ट देता है, और उसके बाद नीचे आ रहा है, तो देन विल सी नीचे की तरफ स्कैल्पिंग के लिए वी कैन सी, बट अभी के लिए कुछ नहीं करना, प्लीज़ डोंट end up losing all your capital, please don't do that. I know it might look like a big move for you, but FOMO mein people end up losing more money than what they typically make, so please don't. इथेरियम लोड नहीं हुआ क्या? इथेरियम अभी तक वापस एंट्री तक भी नहीं आया है, सॉरी एंट्री तक भी नहीं आया यार, डिड नॉट इवन कम टू द एंट्री ऑफ द शॉर्ट। देखते हैं, इफ इट कम्स डाउन जस्ट रिमेंबर दीज वैल्यूज, दैट्स इट, रिमेंबर दीज वैल्यूज, दैट्स इट, एंड मैं इधर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ओनली इफ इट सस्टेन्स बिलो 2270 प्लान अ ट्रेड नीचे की तरफ। एंड अभी स्टॉप लॉस भी काफ़ी लंबा, इट इज़ गोना बी अ 1:1 ट्रेड, नॉट इवन 1:2, सो वो रिस्क मत लेना, मेरे हिसाब से वो रिस्क मत लेना, प्लीज़ वेट फॉर मार्केट्स टू मूव प्रॉपर्ली। मोमेंटम आएगा, जब मोमेंटम आएगा यू नीड कैपिटल, बिफोर द मोमेंटम कम्स इफ़ यू फिनिश ऑफ योर कैपिटल टेकिंग स्मॉल लॉसेस cumulatively washing your capital off, then there is no point in saying all this. So प्लीज़ वेट 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर मेरे हिसाब से इफ़ द मूव डज नॉट कम्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई थिंक, देन आई विल एंड दिस ट्रेड फॉर नाउ। 7:30 आई विल रिस्टार्ट, 7 o'clock 7:30 I will restart the trade, restart the stream. And yes, if you are from India and if you are doing option trading in India in BankNifty or Nifty, you shall join my stream from Monday, where I will be doing live streams on Nifty and BankNifty also. You saw what happened here, right? Just like how I was saying, like इधर जो like लोगों ने इधर एंटर किए थे when this candle was there, those people would have been exited
or reach their stop loss once it came back to this trend line. इधर exit किए होंगे, and next candle when it started moving down again, once it broke this value, and even if they did not even wait for the closing of this candle, and they would have taken another trade here, इधर तक गया, I agree, and market with a small gap up movement, the other candle opened with a gap up, इधर से एक थोड़ा गैप लेके ऊपर के तरफ ओपन किया है, and it is going up. This is why this is exactly what I was explaining like 10 minutes before, literally 10 minutes before, when I told you not to enter here. नीचे की तरफ तब देखेंगे जब ये चैनल के अंदर वापस आएंगे, or if I want a sustaining fall, like a proper fall, then I will wait till almost this value 10200, 700 points नीचे. I know all these are big supports and resistance that I am calling out to, but I am doing that so that whenever I take the trade, I might only take a trade or tell about a trade once a day or maybe once in 2 days, but that trade will be more than enough to actually book the profits, and book for the whole week's profit. वही सिंगल ट्रेड देंगे. ये छोटा छोटा ट्रेड लेके कुछ नहीं मिलने वाला है भाई. लाइक बिलीव मी, यू कैन नॉट सस्टेन दैट प्रॉफिट फॉर एवर. छोटा ट्रेड, एक ट्रेड में 10% कमा सकते हैं, आई एग्री, लेवरेज यूज़ करके, बट एंड यू वुड हैव ग्रोन फ्रॉम 10,000 रुपीज़ टू 1 लाख ऑल्सो इन क्रिप्टो. उसके बाद एक ही ट्रेड में विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ये प्रॉपर स्टडी के साथ नहीं कर रहा है, यू आर जस्ट एंटरिंग स्मॉल जस्ट अभी हाँ 10% कमा के मैं जाएंगे करके वो प्लान के हिसाब से चल रहा है, तो एक दिन पूरा वॉश आउट, लिक्विडेट हो जाएंगे. लाइक इधर ना ये 3 कैंडल या 4 कैंडल, पिछले 4 कैंडल के अंदर I am sure there would have been a lot of people who would have suffered good losses, very good losses. When I say good losses, that is because it's a good portion of your capital. And people who use a lot of leverage, 120x या 100x leverage use करने वाले जो लोग हैं ना, उनका तो पूरा अकाउंट ही लिक्विड है, जो like it would have been completely liquidated. See, that is why I say wait till that like proper momentum, let it kick in, let the movement happen, let the market starts moving. मूवमेंट के पहले प्री बुक करके वेट करने के लिए लाइक फिल्म टिकट्स नहीं है गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. जस्ट बी देयर, like be there till the market makes that move, and when the market moves, then we'll book profits. Till then, just be calm. Let however the market goes. If it does not, if it is not backed with our studies, if it does not, whatever, how much ever big the move is, if it is not backed in the studies, don't enter that trade. Do not enter that trade. Even if स्टडी के हिसाब से कर रहे हैं and then you are suffering losses, that is fine. That is at least something we can accept. हाँ, it's good, because no trading strategy or whatever, like no strategy is 100% accurate. You might be able to find like 100% accurate or 10,000% accurate strategies on YouTube. No guys, that is not true. There is no strategy that is 1,000% or 100% accurate. So if you stick on to your study and then suffer a loss, it is fine. You can at least say that, हाँ भाई, I just stuck on to my study. My study went wrong. That happens. That is normal. That is fine. Proper risk management उधर है तो like it's fine. But ये सडन मूवमेंट्स देख के फोमो हो रहा है, उसमें थोड़ा हाँ इधर रिजर्व करके रखता है, इधर से नीचे जा रहा है तो हाँ गुड प्रॉफिट्स. नो, then that is stupidity. You will end up losing all the money. I would say wait. इधर भी इस फॉल को भी like easily covered up, इधर ये फॉल को भी easily cover up कर रहा है. We'll see if this comes back in this trend line,
or is it gonna take this trend line as a resistance and push back down? नीचे आ रहा है तो the market is gonna be consolidated for some time. So वो consolidation के टाइम में थोड़ा rest लेके वापस आएंगे. If it is gonna move up, then it's fine. Still Bollinger Band is here, but 30 minutes में Bollinger Band में भी space है, like there is a gap. Okay, it is somewhere just above. Okay, cool. 30-minute candle would end in 2 minutes 55 seconds. If it is closing somewhere here na above 731, then this can be a retest and then it can move back up. Nahi, if it is gonna be something around this value or even niche somewhere around 680, then I am ending the stream right away. I'm not waiting for the next 3 minutes. Okay, it's already 6 as I told. नहीं यार, अभी मैं नहीं बैठ रहा. If it is gonna end somewhere, if this candle is gonna close somewhere here or niche, then I am not sitting in this trade. Sitting in the stream at least for now. Because नीचे के तरफ में तब देखेंगे when it is below 102,000, or for at least a scalp, then I would need it below 102,200. उसके पहले नहीं यार, उसके पहले I am not looking for any scalps also in the market. Back to 5 minutes. इधर बहुत ट्रैपिंग हो रहा है, पिछले 3-4 या 5 कैंडल में बहुत लोगों को ट्रैप किया है. सो प्लीज़ जस्ट वेट. नीचे के तरफ या ऊपर के तरफ कहीं भी मार्केट जा रहा है, इट्स फाइन. जस्ट वेट फॉर इट टू गिव प्रॉपर प्राइस एक्शन या कुछ भी, वॉट एवर यू फॉलो, एनी इंडिकेटर्स दैट यू फॉलो, उसका कुछ इंडिकेशन या कंफर्मेशन देने दे, उसके बाद देख लो. तब तक नहीं. डोंट गेट स्टक इन एनी ट्रेड्स प्लीज़. कुछ नहीं यार, लोगों को फंसा रहा है. दैट्स इट. मैं भी 2 मिनट में मैं स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ. 1 मिनट में ये कैंडल का क्लोजर में एक्सिट कर रहा है. देन 7 बजे कंटिन्यू करेंगे हम. 7 या 7:30 बजे वेन एवर प्रॉपर मूवमेंट कम्स. एनीवन हु इज सीइंग, अभी ये ट्रेड भी मत लेना. इट नेवर ट्रिगर्ड आवर एंट्री, बट स्टिल ये ट्रेड अभी के लिए मत लेना. मार्केट कंसोलिडेटिंग है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आया है, आई एग्री. बट इधर आप ट्रेड एंटर कर रहे हैं तो इधर का एंट्री ले रहे हैं तो समवेयर हियर, इसका इधर 1 सेकंड सॉरी, इफ दिस इज योर एंट्री then your stop loss should be here. minimum stop loss should be here, and your target maximum could be somewhere here. So it makes no sense. It literally makes no sense. Your stop loss is 10 points and your target would be 7 points. So I would rather say don't take this short trade here also. Just after the consolidation, whenever the move happens, then उसके बाद देखते हैं. ये ट्रेंड को ब्रेक किया है, आई डू एग्री, बट इट इज़ मोस्ट लाइकली टू कंसोलिडेट हियर. इट इज़ मोस्ट लाइकली टू कंसोलिडेट हियर. गोल्ड का सीन क्या है? गोल्ड का ऑलरेडी मार्क किया है, ये इट इज़ कमिंग बैक टू ऑलमोस्ट द सेम रेंज अगेन एंड बाउंसिंग बैक. सो वील गेट द बिग मूव इन गोल्ड वेरी सून. ये चार्ट देखिए, कीप दिस इन माइंड. द बिग मूव कैन हैपन इन गोल्ड एट एनी टाइम. And for Bitcoin, अभी कुछ नहीं. फॉर मी Bitcoin is, आई एम नॉट लुकिंग इवन इनटू Bitcoin. अभी के लिए कुछ नहीं है Bitcoin में. नीचे की तरफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. ऊपर की तरफ ओनली अबाउ दिस लेवल देखते हैं. और
नीचे के तरफ में तब देखेंगे व्हेन बोलिंगर बैंड हैज आल्सो मेड अ गैप and it is inside the channel or it gives a good momentum move, then I'll look into like Bitcoin. तब तक नहीं, तब तक I won't look into Bitcoin. देखते हैं, we'll meet around 7 o'clock, 7:30. So yes, that's done. ये स्ट्रीम अभी मैं इधर एंड कर रहा हूँ.